अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अमेरिकी उत्पादों के आयात पर भारत द्वारा लगाए गए बहुत सारे टैरिफ के जवाब में अमेरिका की तरफ से भी टैरिफ लगाने के अपने इरादे को दोहराया। ट्रंप ने ये टिप्पणी मंगलवार को की। Trump, for the past 4 years, is talking about India's tariffs. He's calling India as tariff king, the biggest abuser of tariffs. But while talking this, he focuses on the highest tariffs. For example, he says India's tariffs on whiskeys are very high. So American whiskey has to pay 150%, whereas the Indian whiskey comes to America at 10%. Or the tariffs on American Harley Davidson are very high. So if Trump talks about highest tariffs, American highest tariff at tobacco at 350% is higher than India's highest tariff on whiskeys at 150%. Second, he talks about reciprocal tariff. If American whiskey has to pay 150%, Indian whiskey also has to pay similar amount while coming to America. किसी उत्पाद पर उच्च टैरिफ आमतौर पर इसे और अधिक महंगा बना देता है। बढ़ी हुई लागत का बोझ आखिरकार उत्पाद खरीदने वालों पर पड़ता है। इस तरह के टैरिफ भारतीय वस्तुओं को अमेरिका में कम प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं, जिससे निर्माताओं के सामान की बिक्री और मुनाफा कम हो सकता है। Tariffs, they decrease the competitiveness, it increases the price. So of course, if Trump increases the tariffs, there may be some impact on the exports. But what will be the impact? We can only talk in a precise way after looking at the product he chooses to increase the tariffs. For example, when Trump put the tariffs on steel and aluminum from India, then our steel exports have US gone down substantially. Now it is to be seen what product he chooses to put duty on. If they put the duty, surely there could be some temporary effect, but end of the day, the consumer will have to pay the higher price in US. And secondly, we will have to see how we are placed vis-a-vis duties that he plans to put on China as well, because he has also given the similar threat to China. And then we may be on par. So I don't think that much of a problem will be there. So in the immediate, yes, there could be for a few months, but then gradually it will take its own time and it will settle down. विदेश व्यापार महानिदेशक संतोष कुमार सारंगी ने बुधवार को CII की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पारस्परिक शुल्क लगाना वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत को पारस्परिक शुल्क लगाने की ट्रंप की टिप्पणी पर वेट एंड वॉच का रुख अपनाना होगा।